Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Sambal Hussain. I will teach you biology. Today we are going to discuss chapter 1 of biology, that is introduction to biology. Our topics are what is biology, branches of biology, and biology and other sciences. So first of all we will define biology. The word biology is composed of two Greek words. Bios means life and logos means study. Biology is a branch of science which deals with structure, function and composition of living organisation. Simply हम कह सकते हैं biology is a study of life. बायोलॉजी में हम जिंदगी के बारे में स्टडी करते हैं. It covers all aspect of the study of living organisms. तो स्टूडेंट्स इट मीन्स बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन और कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं. Biology is further divided into two main branches, botany and zoology. Botany is the study of plants and zoology is the study of animals. Botany में हम पौधों के मुतालिक पढ़ते हैं और zoology में हम जानवरों के मुतालिक स्टडी करते हैं. और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको पहले प्लांट्स और एनिमल्स क्लासिफाई किया जाता था, they have now been separated into independent group and their study is called as microbiology. Students, बायोलॉजी की स्टडी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट रिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स विद एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. यानी बायोलॉजी रिलेशन शो करती है उन एनिमल्स के दरमियान जो मौजूद हैं और जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. एक्सटिंक्ट वो एनिमल्स जिनकी कोई भी स्पीशीज मौजूद नहीं होती, उनको हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं. और इसके अलावा बायोलॉजी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ characteristics from one generation to next generation. Biology provides information about structure and function of an organism. और biology help करती है in identification of animals on the basis of their similarities and dissimilarities. Okay, our second topic is branches of biology. Some of the important branches of biology are discussed as morphology. It's a branch of biology which deals with the study of external structure of living organisms. इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं. यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साइज, शेप, कलर और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये तमाम चीज़ें हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे. Second is anatomy. It deals with the internal structure of living organisms after dissection. इस ब्रांच में हम एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में जो भी टिश्यूज होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं. थर्ड ब्रांच इज हिस्टोलॉजी. It deals with the study of tissues of living organisms. अभी टिश्यूज क्या हैं? Cells combine together to form tissues. और tissue is a group of cells which are similar in structure and functions. Cells combine होकर tissues बनाते हैं और tissues combine होकर organs बनाती हैं. Then उसके बाद organ system और फिर organisms. In animals, these tissues are nervous tissues which form nervous system and muscle tissues which form muscular system. In plants, conducting or vascular tissues and many other tissues are present. We will discuss these tissues in chapter 2 in detail. Fourth branch is cytology. It is the study of structure, function and composition of cells and cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria. साइटोलॉजी में हम सेल्स के मुतालिक स्टडी करेंगे. सेल का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, तमाम चीज़ें
हम साइटोलॉजी में डिस्कस करेंगे, इसमें न्यूक्लियस का बिहेवियर भी आ जाएगा. Physiology. It deals with the study of functions of different parts of living organisms. यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ऑर्गन किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह अपना फंक्शन कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल हार्ट किस तरह ब्लड पंप कर रहा है, किडनी किस तरीके से ब्लड को फिल्टर कर रही है, स्टमक के अंदर डाइजेशन किस तरह हो रही है, ये तमाम चीज़ें हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में. Ecology. Ecology deals with the study of interaction of living organisms to their environment. मतलब जानता है का माहौल के साथ क्या ताल्लुक है और ये ताल्लुक एक सिस्टम फॉर्म करता है जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. फॉर एग्जांपल interaction of living organisms to their environment is called ecosystem and their study is called as ecology. Ecology is also called as environmental biology. Embryology. It's a study of progressive developmental changes of an organism from a zygote. इस ब्रांच में हम मुख्तलिफ चेंजेस को स्टडी करते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. टेक्सोनॉमी. द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी. इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन क्लासीफाई करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. फॉर एग्जांपल all fishes belong to class Pisces. Genetics. It deals with the study of heredity and variation. इसमें हम स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनहेरिट होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, और जीन्स किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं, तमाम चीज़ें हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे. जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. पैलियोंटोलॉजी. इट्स अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल इज एनी प्रिजर्व remains impression or traces of any once living thing from a past geological age. मीन्स जो एनिमल्स पास्ट में थे अब नहीं है, उनका कोई भी स्केलेटन, शेल या फिर कोई बोन जो आज के दौर में डिस्कवर्ड हो जाए उसको हम फॉसिल्स कहते हैं. पैलियोंटोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू branches, paleobotany and paleozoology. Paleobotany is the study of plant fossils and paleozoology is the study of fossils of animals. Biochemistry. It deals with the study of biochemical basis of life and chemical processes carried out in living organisms. यानी लिविंग सिस्टम में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनके बारे में स्टडी करना. Microbiology. It's a branch of science that deals with the microscopic organisms like bacteria and viruses. Biotechnology. Biotechnology is the technology for welfare of living animals. In this technology, living organisms are used to obtain useful products. For example, insulin is produced by adding human gene in bacterial DNA. Insulin is very helpful for treating diabetes. Okay, last topic is biology and other sciences. Biochemistry. You know very well that biology is the study of life and chemistry deals with changes involved in matter and also deals with properties, composition and structure of matter. So biochemistry explains synthesis of biomolecules like proteins, carbohydrates, nucleic acid and their effect. Biomolecules means compounds produced by living organisms. बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है कि लिविंग बॉडी में केमिकली क्या चेंजेस आ रही हैं और कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, लाइक जेनेटिक मटीरियल, डीएनए, deoxyribonucleic acid and RNA. Ribonucleic acid are also chemicals. Enzymes and hormones produced in the living organism are also chemicals. And plants, photosynthesis is a chemical reaction.
Biology also shows its relation with physics. Physics is the study of nature and properties of matter and energy. In biophysics, we apply laws and techniques of physics to explain the metabolism of living organisms. Metabolism is a process of breakdown and addition of molecules. Biological principles such as microscope, X-rays, and ECGs are based on principles of physics. इसके अलावा बायोफिजिक्स में मेथड्स हैं लाइक कार्बन डेटिंग एंड रेडियो लेबलिंग जिनकी मदद से हम फॉसिल्स की एज मालूम कर सकते हैं यानी बायोलॉजी में फिजिक्स की नॉलेज रिक्वायर होती है लिविंग सिस्टम को समझने के लिए. Biometry. It's a branch of mathematics which deals with the study of data and measurement related to living organisms. इसमें हम ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की एग्जांपल्स ले सकते हैं कि उसमें लिखा होता है कि वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स की तादाद क्या है, प्लेटलेट्स कितने हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है. ये सब पॉसिबल होता है मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स की नॉलेज की वजह से. All biologists conclude their results by using knowledge of statistics and mathematics. Behavioral biology. It deals with the study of behavior of an organism. Behavior is the change in activity of an organism in response to certain stimuli. These stimuli may be external or internal. यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई की तरफ. यानी कोई भी चेंजेस होती हैं उनकी तरफ वो रिस्पॉन्ड करता है. हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है और मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, बायोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं होते हैं और कुछ ब्रेक डाउन होते हैं. तो इन चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी का क्या रिस्पॉन्ड होता है. फॉर एग्जांपल अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा, बॉडी किस तरह बिहेव करेगी. और अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा. ओके. बायोसोशियोलॉजी. इट डील्स विद सोशल बिहेवियर. ये हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ हम किस तरह इंटरेक्ट करते हैं. इसमें हम स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की मिसाल ले सकते हैं, like the large increase in number of plants and living organisms results in a keen competition for space, food, light, and air. So competition between animals is a social behavior. Thank you for listening my lecture. Hope you